most important rebellion of this period is called the Kuki uprising. The Kuki uprising took place in 1917 when the First World War was about to begin. Actually, there was a long anger against the British. The Britishers had occupied their land and they were being used as impress labor. They were forced to do forced labor, and they were, tribals are very independent and proud-minded. They will starve, but they will not work as servant of others. But here they are being forced to work for the British. All this time they had objected, but now they are being forced in a large scale to fight another man's war, what is known as in their language white man's war. They are saying, why should we fight white man's war in Europe? We don't want to go. So the Kukis revolted. And Kuki revolt, though it is mentioned in Indian history, it is not given enough importance. I just want to say that according to the British record, the expenses to suppress the Kuki uprising was much more than the expenses of suppressing the 1857 rebellion. So that shows how important it is. How important, and it lasted almost for 3 years, from 1917 to 1920. Eventually, of course, they were suppressed, and most of the Kuki chiefs were transported or hanged, and it was completely suppressed. So this is a very important uprising that need to be mentioned. I must mention that this Kuki uprising is quite known in Indian history books, but the importance, it is finished in 2 lines or 1 line. But it should be given much more space, because according to the British themselves, it was much more important than the 1857 revolt themselves. The Britishers were very, very scared. The tribals, their idea was the tribals are very, very violent people. They don't believe in submitting memorandum, and they believe in killing people, killing their oppressor. So therefore, if the tribals become violent again, it will be very difficult for the British to live in Northeast, especially proved by the Kuki uprising of 1970. So they did not allow the tribals to take part in any nationalist movement. Even if they had to go, suppose that Kuki or a Naga or a Lushaitev has gone from hills to Guwahati or Calcutta to study, he had to give a written undertaking that he will not take part in any Congress activity or any Congress. So he had to give it. So that is one way they had to stop the tribal uprising. The biggest uprisings था ब्रिटिश राज के खिलाफ. ये लड़ाई उनके एंसेस्ट्रल जमीन और स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी. कुकी जनजाति उत्तर पूर्व के राज्यों, म्यांमार के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश में फैले हुए हैं. नागा और कुकी राष्ट्रवाद दोनों के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐतिहासिक क्षण था. युद्ध के दौरान ब्रिटिश अपने साम्राज्य के हजारों लोगों को युद्ध के प्रयासों में सहायता के लिए भर्ती करा रही थी. नागाओं को इंपीरियल आर्मी के लेबर कॉर्प्स के हिस्से के रूप में सेवा में लगाया गया था, जो सड़कों के निर्माण, सामान ढोने और ऐसे ही और प्रकार के रासद सहायता प्रदान करने के लिए भर्ती किए गए पुरुषों का एक विशाल निकाय था. वहीं कुकीज ने लेबर कॉर्प्स ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया. ब्रिटिश ने मणिपुर के राजा से कॉर्प्स में भर्ती करने के लिए लोगों की मांग की और उन्होंने 2000 आदमी ब्रिटिश को प्रॉमिस किया. बट कुकी चीफ्स ने मना कर दिया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग का ऐलान किया 1970 में. हिस्ट्री कौन या कब लिख रहा है, इसके अनुसार इस लड़ाई के कई नाम हैं. ग्रेट कुकी रिबेलियन, कुकी राइजिंग, द एंग्लो कुकी वॉर एंड द जोगाल. हालांकि ये अपराइजिंग सबसे सिग्निफिकेंट है, लेकिन कुकीज ने ब्रिटिश के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस 18th सेंचुरी से ही शुरू कर दिया था. ब्रिटिश डिफेंस बाद में असम राइफल्स बनी, जो कुकी अपराइजिंग के खिलाफ पहला लाइन ऑफ डिफेंस भी था. डॉन मॉर्गन किपगिन लिखती है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद से पूरे भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे महंगा सैनिक अभियान यही था. 5 कुकी चीफ्स ने रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस के बाद जंग का ऐलान किया, जिसको रेजिस्ट करने के लिए सबसे पहले भेजे गए थे असम राइफल्स और बर्मा मिलिट्री फोर्स. बट 1918 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी शामिल करना पड़ा. हालांकि कुकीज लड़ाई हार गए, लेकिन हिस्ट्री में ये वॉर सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो ब्रिटिश के आगे झुके नहीं और एंड तक अपने राइट्स के लिए लड़ाई करी. नॉर्थ ईस्ट पर नजर का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करें. नमस्कार.